All right, so welcome to lecture number 9. What is going to be the agenda for today? So we will start a new chapter, which is discrete random variable and probability distribution. And at the end of the class, like the last half an hour, we'll discuss any doubts that you might have from the previous lectures or chapters. This is your chapter number 3 from your book, Devore. Okay, your book Devore, uska chapter number 3 hai ye. Fine. Chalo ji. Okay. So, as you can see, the name of this chapter is discrete random variable and probability distribution. Lot of things are there which we do not understand. Lot of words are new. Don't know what is discrete. I don't know what is random variable. I know probability, but I don't know what is probability distribution. So a lot of new things are there. Okay. So let's try to understand the definitions of each of them one by one. सबसे पहले रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? रैंडम वेरिएबल now what is this random variable? Let me first define this. Let's understand the definition of this. Okay, so this random variable concept, it's trying to bridge a gap. It's trying to bring us from one place to other, which is, in probability, we used to talk about experiment, right? What is an experiment? We did the definition of experiment. What is the definition of an experiment? What was an experiment? So rolling a die, it was an experiment. Tossing a coin, it was also an experiment. Going for an exam and getting some marks, that is also an experiment. So what is the definition of an experiment? Anything whose outcomes are not certain, right? There is some uncertainty related to what the outcomes could be. So when you roll a die, you can get 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are not certain about the outcome, right? So anything wherein you have uncertainty attached to what outcome you can get, that is called an experiment. And we said, if you mention all possible outcomes of an experiment, what do we call that? What do we call that? Sample space. We call it a sample space, right? तो अगर एक एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, अगर उसको मैंने मेंशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. अब रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? रैंडम वेरिएबल क्या करता है? तो रैंडम वेरिएबल जो है सैंपल स्पेस से लिंक्ड चीज है एक, ठीक है? तो वो क्या करता है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, whatever experiment that we are talking about, it will have some sample space. Every experiment is associated with a sample space. Okay, so what does random variable do? What is a random variable? What does it do? Let's see what is the definition. So for a given sample space, for a given sample space, for a given sample space S of some experiment. So we are talking about some experiment, okay? So whatever the sample space that we are talking about with respect to some experiment, what is a random variable? A random variable it is nothing but, it is a rule. Okay, random variable is a rule. Random variable is any rule that associates a number with each outcome
in my sample space. So what is a random variable? Random variable is nothing but a rule. It's a rule which, associates a number with every single element in my sample space. So for whatever sample space that I'm talking about, I will have different outcomes. For every possible outcome, what does a random variable do? It gives you one number. So let's say, if my sample space is, tossing a coin. So what I can have heads and I can have tails. If I am writing heads and tails, is head a number? हेड कोई नंबर तो नहीं है. हेड तो एक वो है, एक साइड ऑफ द कॉइन है. एंड टेल इज ऑल्सो नॉट अ नंबर, इट इज ऑल्सो वन साइड ऑफ द कॉइन. सो वॉट डज अ रैंडम वेरिएबल विल डू कि in the random variable, it will be a rule, whatever type of rule that we talk about, it will give one number for h and it will give me one number for tail. There are two outcomes. For every single outcome, it will give you one number. So random variable is nothing but any rule which will associate a number with each outcome in your sample space. Okay. We will look at a lot of examples here. All right. So mathematically speaking, what is a random variable? A random variable is a function. It is nothing but a function. What is a function? Function क्या होता है? What is a function? We've talked about this in mathematics, right? Function क्या होता है? Function is a rule that assigns the value to y. Right? So for whatever possible values are there in your domain, it gives you one value in your range or one value in your codomain, right? So function is also a rule. Similar तरीके से random variable is also a rule. And what is it doing? For all possible numbers in my sample space, it is giving me one number, right? So what will be my domain? What are the possible values that my random variable is taking in my domain? Sample space. Sample space, because what am I doing? I am picking every single outcome in my sample space and giving one number to it. So my domain for the random variable is going to be my sample space, right? Because every single element in my sample space will be provided a number. Okay. And number. So your domain is sample space and you are providing number for each element in the sample space. So what will be your codomain or what will be your range? You're giving one number. So number कहाँ होते हैं? नंबर्स को अगर मुझे एक सेट में डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ? Real numbers you can say, right? So random variable is a function whose domain is sample space and whose codomain is going to be what? Real numbers. Exactly. So mathematically, what is random variable? It is a function whose domain is sample space, is the sample space, and the range, meaning whatever possible values it can take, it is nothing but is the set of real numbers, right? So random variable is a function. So यहाँ पे क्या है मेरी domain? My domain is my sample space, right? Okay. And then I have a random variable, which is my rule or my function. You will pick different elements from your domain. You will put it through the rule or the function, and it is going to give you an output in the set of real numbers, right?
So this is the whole transaction which is going on. So what is your input? Your input is your sample space. You are passing your each outcome from the sample space through the rule, and then it is giving you a real number out of it. This is the entire system. Okay. This is how we are operating. Okay. Now, some general things. Usually, whenever you have to talk about a random variable, we use capital letters. Okay. So, random variables are usually denoted by uppercase letters. So, whenever I have to talk about a random variable, I will say that X is a random variable, or Y is a random variable, or Z is a random variable, or W is a random variable. So, I will use capital letters to denote the random variable. Okay. So, what is happening? So, random variable is nothing but it's a rule. And what will this take as input? Input will be the elements in my sample space, right? Elements in my sample space. Okay. And it will give me some value X, some value X, some number X, right? If you write it like this, meaning, what does this mean? That this number X is associated with my outcome S. So what does this mean whenever I write something like this? That this X number is associated with my outcome S. Okay, this is associated with the outcome S with the outcome S. With the outcome S by the random variable X. So through this rule X, this particular element in my sample space is associated with this particular number X. This is the meaning of this particular statement. That I had an element in my sample space, and when I am putting it through this rule, I am getting a number X. Fine? Is that okay? Ma'am, I'm not clear with the example. Could you give me a example of this? Yes, we are giving examples. Okay. So basically, let's say you toss a coin 2 times. Okay. My experiment is what? My experiment is tossing a coin 2 times. So can you tell me what will be my sample space for this experiment? Ma'am, HT, TH, comma HH, TT. Right? These are all the possible outcomes in my sample space, right? Yes. So I have to define some random variable. I have to give you some examples of random variable. So let's say my random variable is X. X is my random variable. And what is the rule? That the random variable is number of heads while tossing the coin. This is the rule, okay? All right. So you have to pick one element from your sample space, check what is the number of heads that you have received in that particular outcome, and then you have to give that number. Okay. So tell me, what will be the random variable X when my sample space element is HT? 1. Because what is the number of heads here? 1, right? 1. What will be the value of my random variable when it is TH? 1. Again 1. What will be my value of random variable when it is this? 2. 2. Very nice. What will be the value of random variable when it is this?
0. 0. So what have I done here? Have I not associated every single value of my outcome with a number? Here I gave number 1, here also I gave number 1, here I gave number 2, and here I gave number 0, right? Yes. So I converted what? Every single outcome with a number. And my rule was number of heads while tossing the coin, right? Yes. Right. Okay. Can I define some other random variable using the same experiment? Yes. You can define infinite number of random variables using a single experiment, right? So मान लो your y random variable could be what is the number of tails that you get while tossing the coin. This is your rule, okay? Coin. So now, what is the value of YHT? 1. 1. What is the value of YTH? 1. Because one tail. Yes, very nice. What is the value of YHH? 0. 0. What is the value of YTT? 2. 2. So in this case, what did I do? What kind of numbers I gave? I gave number 1 here, 1 here, 0 here, and 2 here, right? Yes. Okay. So this is another random variable that we have created. Let's say I create another random variable, which is of the following form. Let's say I have another random variable, which will be like this. That give number 0 if at least one head comes. And give number 1 if no head comes. This could be my rule, right? My rule could be anything. So what is my rule saying? That you have to give number 0 if there is at least one head that is coming in the outcome, and you have to give a number 1 if there is no head, right? So HT, ZTH, ZHH, ZTT. So what are you supposed to do now? What is this HT? Is there one head at least? Yes, ma'am. So what are you going to give? 1. 1 ki 0? 0. 0? 0. Yes. एटलीस्ट एक हेड अगर आ जाए तो उसको 0 नंबर दे दो. तो इसको 0 नंबर दे दिया. और what happens here? 0. 0. Here also 0. What happens here? HH? 0. 0. What happens here? 1. 1. So are you seeing the way in which we are creating different numbers from different outcomes? Yes. So what are we doing? We are taking elements from my sample space and we are giving numbers in each of the case. I could have said this also, give number 1 here and 0 here. This could also be done, right? I could say give number 2 here, give number 1 here. Using this method only, I can create infinite random variables, right? मेरी मर्जी से मैं कोई भी 2 नंबर पिक कर लूंगी और मैं बोल दूंगी ये नंबर दे देना इसको. तो कितने सारे रैंडम वेरिएबल्स बन गए, राइट? So using an experiment, you can have multiple random variables defined. Okay. All right. Let's take another example. So let's say another example of a random variable could be let's say 10 people. Okay, let's not do that.
So let's say you gave an exam. आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम में लोग या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं, राइट? So if you give an exam, what are the possibilities that we can have here? What is my experiment? Giving the exam. So what is my sample space in this case? मैम पास कॉमा और फेल। या तो मैं पास हो जाऊंगी या तो मैं फेल हो जाऊंगी, राइट? तो मेरा रैंडम वेरिएबल ये हो सकता है कि अगर इंसान फेल हो जाए तो उसको 0 नंबर दे देना, और अगर इंसान पास हो जाए तो उसको कितने नंबर दे देना? 1, right? So if my random variable is give 0 if you fail, या फिर जैसे आप पास हो जाते हो तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, आप फेल हो जाते हो तो आपको 0 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो ऐसे क्रेडिट्स दे दो कि अगर आप पास हो गए तो आपको उस कोर्स के लिए 4 क्रेडिट्स मिल गए, और अगर आप फेल हो गए तो आपको 0 क्रेडिट्स मिल गए, राइट? सो यू कैन से ओके गिव 4 क्रेडिट्स if you pass and give 0 if you fail, right? तो क्या क्या हो सकता है? x of p क्या होगा? 4. 4. एंड x of fail क्या होगा? 0. 0, राइट? ठीक है। अच्छा, do you guys remember one example that we did? We were doing an example of a question wherein we had a box. It had blue balls, white balls, and red balls. And then we said, tell us the number of times you have to you will have to draw the balls until you get your first success. And success is getting a blue ball, right? So मान लो इस तरीके की कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? Experiment is picking balls and stopping after you get 1 blue ball. Okay. And in your box, you had 4 blue balls. Okay. And let's say 5 red balls. Okay. This is the situation. So what could be the possible outcomes in your sample space? So you keep drawing balls, different balls. Okay. And you look at the color, and if it is not blue, you pick again. If it is not blue, you pick again. If it is not blue, you pick again. If it is blue, you stop. Okay, this is your experiment. So what are the possible outcomes in this particular experiment? क्या क्या पॉसिबल, मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? कि या तो Ma'am, मैं we have to pick two blue ball because it is stopping after to get one blue ball. आफ्टर यू, सॉरी, Okay, okay. ठीक है, आफ्टर यू गेट योर फर्स्ट ब्लू बॉल, फाइन. Yes. This is what happens. So what is the sample space for this? Sample space क्या है मेरे पास? या तो मैंने पहली बॉल जो पिक करी वही ब्लू आ गई, राइट? हो सकता है ना? Yes. तो Yes, ma'am. एक एक आउटकम क्या हो गया कि पहली बॉल ही ब्लू आ गई. दूसरा आउटकम क्या होगा कि पहली बॉल ब्लू नहीं आई, पहली बॉल रेड आ गई. फिर हो सकता है दूसरी बॉल ब्लू आ जाए, राइट? फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? पहली भी रेड ब्लू नहीं आई, दूसरी भी ब्लू नहीं आई, तीसरी ब्लू आ गई, राइट? यस और नो?
Yes, ma'am. तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? दिस विल कीप गोइंग ऑन. This Yes, is my sample space, right? So now let's say my random variable. So I have defined my experiment. First of all, मेरा experiment define हो गया है. And then I also have my sample space ready. Now it's my time to define my random variable. Let's say my random variable is number of balls you picked in total to get your first blue ball. कि भाई आपकी पहली ब्लू बॉल पिक करने के लिए आपको टोटल कितनी बॉल्स पिक करनी पड़ी, ठीक है? फाइन, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? व्हाट इज दिस वैल्यू? एक्स ऑफ बी. एक्स ऑफ बी ये क्या है? यहाँ 1. यहाँ पे ब्लू बॉल आने के लिए मेरे को कितनी बॉल्स पिक करनी पड़ी? सिर्फ एक. यहाँ पे कितना करना पड़ा? 2. 2. यहाँ पे कितना करना पड़ा? 3. 3. तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? Yes. तो ये किस तरीके से आ गए? ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स आ गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक. मैम ये 6 तक नहीं जाएगा क्योंकि 5 रेड बॉल्स के बाद में तो ब्लू आएगी, तो 6 नहीं 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 लास्ट. नहीं 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 नहीं. हम लोग ये ओके विद विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. ओके. मतलब क्या किया? बॉल पिक करी, उसका कलर देखा, उसको वापस डाल दिया, राइट? यस. तो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या कर सकते थे? मान लो यही सेम एक्सपेरिमेंट आप करते विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब एक बॉल अगर ब्लू आ गई तो फिर रुक गए. लेकिन जो दूसरी रेड बॉल आई थी फिर उसको साइड में रख लिया, उसको दोबारा वापस बैग में नहीं डालना है, ठीक है? तो अगर यही एक्सपेरिमेंट आप विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे वी आर डूइंग इट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? सो यू हैव हाउ मच? 4 ब्लू बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स, राइट? तो यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? क्या क्या होगा? मैम बी या तो आर. पहली बॉल ही ब्लू आ गई. यस मैम. आर बी, आर बी, डबल आर बी, डबल आर बी, ट्रिपल आर बी, ट्रिपल आर बी, 4 आर बी, 4 टाइम्स आर बी, 5 टाइम्स आर बी. 5 टाइम्स आर बी. इसके बाद कुछ हो सकता है क्या? नो मैम. क्योंकि अगर मान लो आपकी पहली 5 बॉल अगर रेड है तो 6th बॉल हैज टू बी ब्लू, राइट? यस. इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो यहाँ पे मेरे नंबर्स यहीं पे रुक गए, यस. राइट? तो फिर इस केस में मेरा रैंडम वेरिएबल मान लो इसी तरीके से डिफाइन किया तो वो इस एक्सपेरिमेंट तक रुक जाएगा, राइट? इस आउटकम तक रुक जाएगा, है कि नहीं? यस. राइट? तो इस तरीके से भी अलग अलग यू कैन हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन. ऑलराइट, चलो जी. ओके फाइन. नाउ अब रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन होती है सैंपल स्पेस और उसकी रेंज होती है रियल नंबर. So you pick elements, different outcomes that you can have, and you give number to each of them based on a rule, which is your random variable. Okay. This is your Yes. definition of random variable. Okay. Fine. Chalo.
Now there are different types of random variable. Okay. So what are the different types of random variable? Types of random variable. There are two types of random variables. Okay. First is a discrete random variable. And second is a continuous random variable. There are two types of random variables. One is discrete random variable and the other is continuous random variable. Okay. Now, what does each of these means? What is discrete and what is continuous? What is discrete and what is continuous? Do you remember that we discussed it somewhere else also before this? Yes. When Ma'am, discrete could be a whole number. It could be finite or infinite. For example, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And yes, continuous means the set of all numbers that lie between an interval very nice. 1 to 5, 2 to 5, etc. Very good. Very good. Lovely. Okay. So let's define each of them now. Okay. Let's see the definitions now. So first, let's define what is a discrete random variable. What is a discrete random variable? Let's see. So discrete random variable क्या होता है? It is basically a random variable. It is a random variable, RV, random variable, short form for random variable, whose possible values either constitute a finite set or else they can be listed in an infinite sequence in which there is a first element and there is a second element and so on. And we call this countably infinite. Countably infinite. So a random variable is called a discrete random variable if the possible values of that random variable, either they are a finite set, meaning limited number of values. You can count those values. Or if you're not able to count them, you can list them down in a sequence, in an infinite sequence, wherein you will have your first element, second element, third element, fourth element, fifth element. There is a pattern attached to it. You can list your numbers and you call them countably infinite. So either the numbers that random variable takes, it's a finite set, or it's a countably infinite situation. Whenever you are in such a situation, it's called a discrete random variable. Okay, this is the situation. Acha, using this definition, can you tell me what was this? What was this? What was this random variable? What are the possible values your random variable is taking here? 1, 0, 2. So it's taking value ya to 0, ya to 1, ya to 2. Is this a finite set? Yes, ma'am. It's a finite set. So what is this? X here is a discrete random variable, right?
What about the second example? Oh, ma'am, it is also discrete. This is also discrete, right? What about the third example? What are the possible values the random variable is taking? 0 and 0 and 1. So this is also discrete, right? What about this one? Passing and failing. This is also discrete, right? Because the number of the possible values that we can take, it is finite, either 0 or 4, right? Okay, G. What about this now? What are the possible value your random variable is taking here? Ma'am, continuous. It is continuous? Or No, is ma'am, discrete. discrete? Why? Ma'am, because it is a sequence of infinite Right. So this is first of all not a finite set, right? You do not have a limited possible values that your random variable is taking, because it can take value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It can keep going on, right? There's no limit to it. So first of all, the possible values your X random variable is taking, it's not finite, right? Not a finite set. But can you list down the possible values as this is my first element, this is my second element, this is my third element, 4 will be my fourth element, 5 will be my fifth element. I can keep going on like this, right? So what is my sequence that it is taking? 1, 2, 3, 4, and so on, right? So this is an infinite sequence which my random variable is taking, wherein I have a first element, I have a second element, I have a third element, I have a fourth element, and this can keep going on, right? So what kind of a set is this? Countably infinite? But is this still discrete? yes, ma'am. So this is also a discrete random variable. Okay. So whenever either your set of values that your random variable can take, it is finite, or if it is not finite, you can list down the numbers in this manner. Then this is basically a discrete random variable. Okay? Is the definition clear? Fine. तो ये discrete random variable होता है. या तो it is a finite set, possible values of x, possible values of the random variable, either it is finite set or it is countably infinite, meaning you can list down your possible values in an infinite sequence with the first element, second element, third element, fourth element, and so on. Okay. All right. Chalo ji. Now let's define the continuous random variable. Continuous random variable. So any random variable which follows the two properties that I'm about to mention, both properties should be satisfied. It will be called a continuous random variable. So what are these two things that this random variable has to satisfy? So first of all, what is the first condition? So basically, let me first write this, that a random variable is continuous if both of the following conditions apply. So what is the first condition? First condition is its set of possible values consists either of all the numbers
all the numbers in a single interval or single interval on the number line or all numbers in a disjoint union of such intervals. What is happening? So if your random variable, if all the possible values of your random variable, they are all either the numbers in a single interval on the number line or disjoint unions of such intervals. So for example, if all possible values your random variable can take is in this interval 1 to 2, so will it be called a continuous random variable? Yes. So this is one possibility, or it could very well be possible that your all possible set of values could be 1 to 2, union 3 to 4, union 5 to 6, something like that, right? Yes. So either if your possible values of the random variable, all the numbers in the single interval like this, or disjoint unions of such interval. Disjoint meaning they should have nothing in common, right? Something like this. So this will also be a proper candidate. This will also be a proper candidate for being a continuous random variable, right? Is that okay? Yes. Chalo. This was the first condition. Now, what is my second condition? Second condition is no possible value of the variables, no possible value of the variable has a positive probability. Meaning, if you find the probability that your random variable is taking value something C, then this has to be 0 for any possible value of C. So let's say your random variable is basically, taking value from 1 to 2, this closed interval 1 to 2. So if you find the probability of your random variable taking value 1.5, so this will have to be 0. If you have to find the probability that your random variable is taking value 2, it also has to be 0. So basically, no possible value of your random variable should have a positive probability attached to it. All the single values should be given 0 probability. This is the situation that we have. Ma'am, please explain the second one. Yeah, so basically what you're trying to say is that, okay, all right. What we are saying is, let's say your random variable is continuous random variable example could be okay, so let's say you are drinking water. Okay, you are drinking water. You have one bottle of 1 liter. 1 liter water you drank, right? आपने 1 लीटर पानी पी लिया, ठीक है? तो जो आपकी बॉटल थी
वो 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, 1 लीटर्स। तो आपने क्या किया, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर, स्लोली स्लोली यू विल सिप द वाटर, राइट। सो धीरे धीरे लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड आपने पूरा 1 लीटर पानी खत्म कर दिया है, राइट। तो आपसे ये पूछ रहे हैं, आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, कि व्हाट वाज द वाटर लेवल एट टाइम टी। तो मान लो आपने 5 मिनट लगाए, ठीक है, यू टुक 5 मिनट्स टू फिनिश द वाटर. So as the time was passing, your water level was going down, right? Continuously. So what were the possible water levels that you had in this 5 minute interval? Anywhere between 0 to 1, right? Because at the end, your water level was 0. In the beginning, your water level was 1 liter. So it has taken all possible values from 0 to 1 liter to 0 liter. Yes or no? Yes. Right. So this particular condition is saying no possible value of the variable should have a positive probability associated with it. Meaning, if you have to find the value of random variable 0.5 when your water level was 0.5 liters, this should be 0. And this should be the case for every single value of C. So C is basically different water levels. So at every single possible point of different water levels, it should be taking a 0 value. This is what we are trying to say. मैम 0.5 में 0 वो कैसे आया? No, okay, this is probability. So X value, so there was some time period. कोई एक टाइम पीरियड था जब आपका वाटर लेवल 0.5 था, राइट? तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वैल्यू बीइंग इक्वल टू 0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए. Similarly, probability of random variable taking value 0.4 should be 0. 0.43 should also be 0. Every possible single value that you can take, the probability should be 0. मैम कि 0.5 लीटर खत्म करने के लिए 0 मिनट्स चाहिए? नहीं, probability, chance. मैम ये could you please repeat the example? So this is not time that we are measuring. जब probability जो है वो time तो नहीं है ना? Yes. Probability time तो नहीं है. Probability जो है वो क्या है कि ये possible value होने के chances क्या हैं. तो जब कोई भी रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तो कोई भी एक सिंगल पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए. सो 0 से लेके 1 के बीच में जो भी मेरी इंटरवल है, इसके अंदर जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, हर पॉसिबल वैल्यू के लिए जो मेरा प्रोबेबिलिटी नंबर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए. मतलब probability of 0 should be 0. Probability of 0.1 should also be 0. Probability of 0.11111 should also be 0. All possible values in between 0 and 1, this interval 0 to 1, they all should be 0. तो ये मतलब है इसका कि कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो है उसके लिए आप उसको एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते. दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. मैम ये जो वाटर वाला एग्जांपल था इसमें क्या है कि अगर 0.5 लीटर हो तो इज इक्वल टू 0, वो वाला में डाउट था. मतलब इस मेरा वाटर लेवल 0.5 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं चाहिए. ओके. मतलब कोई भी ये जो मेरी इंटरवल है इसके अंदर कोई भी पॉसिबल नंबर आ रहा है, उसके होने का चांस 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे.
ठीक है, एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? जैसे आप इस तरीके से देखो, ट्राई टू रिफ्लेक्ट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यस दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे अगर, मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या आ सकती है, 1, राइट, या फिर 0, या फिर 2, है ना? यस मैम। तो मैं अगर 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो क्या होगी, मेरी 2 वैल्यू कब आएगी, जब मेरा सैंपल स्पेस के अंदर एच एच आए, राइट? यस मैम। और एच एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4। 1/4। सो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है कोई भी एक मेरी एक्स वैल्यू 2 आने की, वो क्या हो गई, 1/4। 1/4। तो ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट? यस मैम। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 0, तो वो उसका क्या आंसर होगा आपके लिए? 0 कब आता है, जब दोनों टेल्स हों। यस। तो दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। नहीं, 1/4। ये भी 1/4 है, दोनों टेल आएंगे, टेल आना 1/4, 1/2 टाइम्स 1/2, राइट? यस। एंड सिमिलरली मैंने अगर आपको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा रैंडम वेरिएबल वैल्यू 1 लेता है, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो 1 कब कब वैल्यू लेता है, व्हेन आइदर दिस इज हैपनिंग और दिस इज हैपनिंग, राइट? तो ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। और ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो मेरी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। या तो एच टी आ जाए तो भी 1 आएगा, या तो टी एच आ जाएगा तो भी 1 आएगा, राइट? यस। तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों चीजों में से कुछ भी हो जाए, यूनियन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4। 2/4 विच इज 1/2। तो मैंने क्या पता किया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4। तो मेरे पास ये जो सिंगल सिंगल नंबर्स हैं, इनके आने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, राइट? इट्स नॉट 0। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस के केस में। दिस इज व्हाट इज आवर पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ माय रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 1 इज लेट्स से 1/2, बाकी सारी वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। This is what is the second assumption, second point in my definition. मैम इसमें मतलब 5 मिनट्स के बाद 0.5 लीटर बचने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नो 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 नो, इसको भूल जाओ, इसको 5 मिनट को भूल जाओ। Possible, my random variable is let's say possible water levels, ऐसे देख लो, ठीक है? आई थिंक वो 5 minutes was creating confusion. My random variable is what could be the possible water levels when I'm drinking water from a bottle which had 1 liter water and I finished all of it. तो अलग अलग क्या क्या पॉसिबल वाटर लेवल्स हो सकते थे मेरे वाटर के लिए while I was sipping the water. 0, 0.1, 0. कुछ भी हो सकता है, 0.0 और 0.1 के बीच में भी तो कितना कुछ हो सकता है, राइट? जब आप पानी पी रहे होगे तो वो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस मैनर में पानी कम होता जाएगा, राइट? यस। तो वो तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है 0 से लेके 1 के बीच में, राइट? यस। है ना?
जैसे इंसान की हाइट ग्रो करती है, वो कॉन्टिन्यूस मैनर में ग्रो करती है, एकदम से 1 इंच तो नहीं बढ़ता है या 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है, राइट? यस मैम। कॉन्टिन्यूसली बॉडी ग्रो कर रही होती है। आपका वेट भी ऐसे ही ग्रो कर रहा होता है कॉन्टिन्यूस मैनर में, एकदम से। हाँ, हम लोग सुबह सुबह अगर वी चेक ऑन द वेइंग स्केल, वी सी ओके 1 किलो आई हैव पुट ऑन द वेट, तो देन वो तो आप कॉन्टिन्यूसली नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट? बट आपका वेट तो बिल्कुल 50 से अगर 60 गया है, तो वो बिल्कुल 50 से 60 के बीच में हर पॉसिबल वैल्यू लेके ही गया होगा, यस। राइट? सो इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। किसी भी एक पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये मतलब है इसका। इज द डेफिनेशन क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। मैम हाउ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0.5 liter is zero? I'm not able, still not able to understand. ओके, सो इसको मैं कैसे समझाऊं? इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो। पहली बात तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी ना कि ये जो है ना डेफिनेशन है, दिस इज अ डेफिनेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर प्रूविंग। आई एम नॉट क्लेमिंग समथिंग, आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट, कि any such scenario wherein my probability at any single point is not 0, I will not consider it as a continuous random variable. This is a definition. Definition में आपकी मर्जी होती है, आप जैसे डिफाइन करना चाहो डिफाइन करो। पहली बात तो ये है, ये पॉइंट समझ आया Yes. कि मेरी डेफिनेशन ये है। आपके मतलब डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ये स्टेप्स हैं, ये मेरी डेफिनेशन है। अगर जो चीज इसमें फिट नहीं होती वो नहीं है। अब आप सवाल खड़े कर सकते हो कि ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई है, बट दैट डजंट रिमेन वैलिड। सेकेंड ऑफ ऑल, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बिकॉज डू यू रिमेम्बर दैट डिस्कशन वेर इन तो बेसिकली अगर आप कोई भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को अगर पॉजिटिव नंबर दे रहे हो, तो ये काइंड ऑफ मिक्स बन रहा है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का। कोई भी एक पॉइंट को अगर आप एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दे देते हो, तो ये एक मिक्स बन जाता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का। कि मान लो मैंने बोला 0.5 वाटर लेवल 0.5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बाकी सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी 0 है। तो मेरा एक पॉइंट है जो डिस्क्रीट की तरह बिहेव कर रहा है, कि एक पॉसिबल पॉइंट और फिर बाकी सारे पॉइंट्स। इस तरीके का बिहेवियर आई डू नॉट वांट। सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी एक इंटरवल की होती है, किसी भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। Yes. जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा सा ना इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप मान लो आपके पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, आपके पास ये कर्व कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आपने अगर इस पॉइंट से लेके, अच्छा पहले तो ये बताओ कि मान लो कोई एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ टी, ठीक है, डी टी। अगर इसका इंटीग्रेशन में ए नॉट से लेके ए नॉट के बीच में ही करूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? Have you guys done integration in your class 12 ever? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहती है तो क्या होता है? Ma'am, I think that is zero. दैट इज 0, राइट? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम
कोई मेरा एक कर्व है, उसके बीच में मेरी वैल्यूज होने की प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से निकालते हैं। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप ये इस लाइन का एरिया निकाल रहे हो। लाइन का एरिया क्या होता है? 0। लाइन का तो कोई एरिया ही नहीं होता। तो यस मैम। मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है ना, वो इस तरीके के हैं कि मेरी हाइट जो है, मान लो मेरी हाइट मान लो 4 फीट से 5 फीट 5.5 फीट बढ़ी, ठीक है। तो मेरी हाइट कोई एक टाइम इंटरवल होगा या कोई एक मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरी हाइट 4 फीट से लेके 5 फीट के बीच में होगी। दैट मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ वैल्यूज। उसको मैं कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी देती हूँ, लेकिन मेरी हाइट 4.5438620001 ये थी। इस इवेंट को मैं 0 प्रोबेबिलिटी देती हूँ। Because it was such a minute point in my situation. Because I have infinite values, I cannot give every single point a positive probability. क्योंकि मैं हर सिंगल पॉइंट को अगर कोई ना कोई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दे दूंगी, मान लो मैंने मेरे जो नंबर्स हैं कि भाई मेरा पानी जो है 0 से लेके 1 लीटर के बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू लेता है। आप इमेजिन करो कि आप हर पॉसिबल पॉइंट को 0.00000001 प्रोबेबिलिटी दे देते हो। 0 से लेके 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इंटरवल के अंदर? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। तो अगर सबकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की आप 0.00000001 भी दो और इसको आप इनफाइनाइट टाइम ऐड करते जाओगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? इनफाइनाइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, राइट? यस मैम। इस लॉजिक की वजह से, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन में हम ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं चाहते, वी कीप द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स टू बी 0। ओके, आई गॉट। अभी आगे जाके हम लोग जब थोड़े से ना डायग्राम्स को देखेंगे और वहां पे थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तब और क्लियर होगा कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक पॉइंट को पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दे दी तो you remember we did one proof wherein we said कि probability 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि 0 के अलावा अगर हो गई तो क्या आ जाएगा कि 1 is equals to infinite, right? When we were proving that probability of a null event is 0, right? Remember that? यस। थोड़ा सिमिलर आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, यस। चलो जी, वेरी नाइस, ठीक है। तो ओके फाइन, तो हमने क्या देखा? कोई भी continuous random variable is basically any random variable whose possible values is a set of intervals, is basically intervals or disjoint union of different intervals, and any single point cannot have a positive probability attached to it. Whatever possible numbers your function or your random variable can take, every single point has to have a 0 probability. Okay, सो ये कॉन्टिन्यूअस है और फिर बाकी रैंडम डिस्क्रीट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं तो अब ये सारी चीजें ना, बिकॉज सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस में तो मेरे पास लेटर्स आ रहे थे, ABCD भी आ रहा था, HTHHTTT BR ब्ला 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 कुछ भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उनको रैंडम वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया, आई गॉट ऑल द नंबर्स, राइट? सो नाउ आई कैन ट्रीट लॉट ऑफ थिंग्स मैथमेटिकली, राइट? सो रैंडम वेरिएबल्स में जब भी आप कोई भी तरीके की कैलकुलेशन करोगे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, you will use lot of mathematical tools, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात होती है तो वी यूज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिकल टूल्स,
लाइक व्हाट? समेशन, चीजों को बार बार ऐड करना. यू रिमेंबर दिस सिंबल समेशन? समेशन, समेशन यूज करते हैं, डिफरेंसेस यूज करते हैं. ठीक है. और जब भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रिलेटेड चीजें करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. डिफरेंशिएशन विल बी यूज्ड और इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड. Differentiation breaks things down, integration add things up. So summation and integration. Summation is for discrete tools and integration is the continuous version of that. Differences चीजों को break down करना और वही काम continuous के केस में differentiation करता है. तो ये अलग अलग tools हम लोग use करेंगे. ठीक है. I will keep repeating and explaining, in case some of you might not have that background and you anyways don't have integration in your mathematics course. So in case somebody has not done integration, I will try to let me know in case. Have you done integration before in class 12? Basics? Yes, ma'am. सबने किया है? Narmata, you have also done? Yes, ma'am, the basic integration. Okay. So किसी भी point पे if you feel like you're not understanding it, let me know. I will either provide you some lectures that you can watch so that it's a refresher, or I will try to give you formulas side by side so that you don't have trouble. Okay. So we will keep doing that. All right. So fine. So these are two different sorts of things that we will keep doing. So now we will shift our focus only on discrete random variables because this is what we will be doing now. And the next chapter will be continuous random variable, which is chapter number 4. So right now, in this chapter, we will start talking about discrete random variables. And then later on, we'll shift our focus on continuous random variable. This is how we are going to proceed now. Random variables we've understood. Types of random variables we've understood. Now we will go in detail regarding each of them. Discrete and continuous. All right. So far, so good. Anything? No. Chalo. Okay, fine. All right. So guys, let's take a quick 10 minutes break now and let's continue in 10 minutes. So it's 7:27 right now. Let's continue and start at 7:38. Okay. All right. All right. Fine. Chalo. अब ना कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है there is a concept which is called probability distribution. ठीक है, जो हमारे चैप्टर के नाम में भी आया था, probability distribution, discrete random variable and probability distribution. Okay, so probability distribution for discrete random variable. इसके बारे में बात करते हैं. क्या चीज है ये? What is this all about? All right. So अच्छा, एक बात बताओ. We've said that random variable, what does it do? It takes value from my sample space, right? And it gives me value in real numbers. You know, when you speak so fast and then your writing speed becomes slow. आप सोचते हो कि आपने लिख दिया है, but आप भूल जाते हो लिखना. Okay. So what does a random variable do? It takes value from my sample space and it puts them into the real number. Number line पे वो numbers लेके आ जाता है, right? सैंपल स्पेस में क्या होता है? सैंपल स्पेस में बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, राइट?
all possible outcomes. Acha. Can you tell me what is my probability of sample space? 1. 1. मेरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो वो 1 आएगी. तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मतलब क्या है कि आई वांट टू नो कि मेरे जो रैंडम वेरिएबल में ये जो नंबर्स आए थे, हर नंबर में ये जो 1 प्रोबेबिलिटी है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? सो प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable x, it says how the total probability of 1, how the total probability of 1 is distributed among various possible values of x. So जो मेरा रैंडम वेरिएबल था उसकी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज थी, तो वो जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 थी वो किस तरीके से, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट पर्टिकुलर आइडिया is given by probability distribution. So like in this example on top, this particular example, we saw that, here we found that, probability of number 1 is half. Probability of number 0 is 1/4. Probability of number 2 is 1/4. If you add these 3 probabilities, what do you get? 1. 1. 1. Indirectly, you have already understood what is probability distribution, because here what you have shown that number 0 is given probability 1/4. Number 1 is given probability half. Number 2 is given probability 1/4. So you have explained how this probability, total probability of 1 is distributed among different numbers. This is called probability distribution. Okay. We'll see what is the proper definition, but this is the meaning of it. Distributing the entire probability of sample space among different possible values of your random variable, that is a probability distribution. Okay. So first of all, there is one terminology that you have to understand, which is P of X. What will P of X mean? It will denote the probability which is assigned to the value X. So this will basically be the terminology or notation for explaining that what is the probability which is assigned to number X of the random variable. So wherever you see P1, it means what is the probability that the random variable takes value 1. If you see P2, that will be basically be the probability that the random variable is taking value 2. Okay, this is the terminology. Fine. All right. So now I want to define like proper mathematical way what is probability distribution. Okay. What is probability distribution? Definition. How do I want to define it? I want to define it in the following manner. The probability distribution or it is also called probability mass function. Probability mass function. Probability distribution, another name for this is probability mass function. This is also called PMF.
This is a term which you will keep hearing again and again. PMF, probability mass function. Okay. So the probability distribution or PMF of a discrete random variable. Discrete random variable is defined for every number x. For every number x by, so you know your random variable can take different values. So this probability distribution function or probability mass function is basically defined for every possible value of your random variable. Okay. And how is it defined? That P of x is nothing but the probability that your random variable takes value x, right? Px is basically the probability that my random variable is taking value x. And when does my random variable takes value x? There could be multiple outcomes in my sample space which are giving me the same value of x, yes or no? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस था, फर्स्ट केस, जिसमें नंबर ऑफ हेड्स हम लोग काउंट कर रहे थे. तो HT, TH, HH और TT, ठीक है. इसमें जब हमने नंबर्स निकाले थे तो मेरे पास क्या आया था? 1, 1, 2 और 0, राइट? So here the x value will be numbers. So I have two different outcomes in my sample space, which are all giving me one value, right? Yes. So this probability Px is nothing but probability that my random variable is taking value x. And this is nothing but the probability for all possible, elements in my sample space. Probability of all possible elements in my sample space such that whenever I put that particular element, I get a value x. Okay. This is the definition of probability distribution of, probability mass function of a random variable x. This is the definition. So probability of any number x is nothing but the probability that your random variable is taking that value. And how will you calculate it? You first figure out what are all the possible elements in your sample space which are giving you this number, and then you find the probability of all of that. So for example, in this case, let's say if I have to find the probability of 1, what will that be? Probability that my random variable is taking value 1, which will basically be the probability of which two elements? HT and TH. HT and TH, because whenever you put HT, you get 1, and whenever you put TH, then also you get 1, right? So this is the definition. So आप क्या करोगे? कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? आप जाके चेक करोगे कि ये नंबर सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और उन सबकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे, और वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर होगी, राइट? इज दैट लॉजिक क्लियर? Ma'am, do we have to add, for example, HT plus TH, 1 upon 4 plus 1 upon 4, or we should write only 1 by 4 in P of x is equal to 1. सो आपको ये सारे इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो आपको ये बताना है कि HT भी हो या फिर TH हो. You have to find the probability of union. तो मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 आएगा या 1/4 प्लस 1/4 करेंगे? 1/4 प्लस 1/4 ही होगा ना, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे, राइट? यस मैम. क्योंकि दो पॉसिबल केसेस में इट वाज कमिंग आउट टू बी 1. So you will add those values. Okay. Okay. So you have to find the probability of this and this. I mean this or this. Because in both the cases you are going to get something like 1. Right?
So in this case, it will be nothing but probability of HT plus probability of TH, which will be 1 by 4 plus 1 by 4, which will be 1 by 2, right? Yes. Okay, that is how you calculate. And whenever you write probability distribution function or probability mass function, it is defined for every possible value of X. So you have to do this for every possible value of X. So you have to do this for 0 value also, for 1 value also, and for 2 value also. So for 0 also, you'll do the same thing. For 1 also, you'll do the same thing. For 2 also, you will do the same thing. Whenever you do it for all possible values and you list it down, that is your probability mass function. Okay. All right. Yes. All right. So, okay. Fine. There are few things that you have to note, which is, so what is PMF or what is PDF? In other words, for every possible value of X, for every possible value of X of the random variable, for every possible value of X of the random variable, the PMF will do what? The probability mass function will specify the probability of observing that particular value whenever your experiment is performed. When the experiment is performed. Okay. So whenever you perform an experiment, what is the probability that you will see 1? What is the probability that you will see 0? What is the probability that you will see 2? That is the situation. So PMF tells you what are the chances, what is the probability of you observing different numbers when you perform that experiment. So now you've just converted your sample space into different numbers. So 1 we will observe if either we will get HT or TH. So we add those probability. We will get 2 if we get HH. So what is the probability of that? 1 by 2. What is the probability that we will see 0? That is when we have tail. What is the probability of tail? 1 by 4. So we have seen 1 probability, 0 wale ki probability and 2 ki probability. So PMF kya karta hai? It tells you for every single number that your random variable takes, what are the different probabilities that you will see when you perform that experiment. Okay. All right. This is the definition of probability distribution or probability mass function. This term PMF, you will see specifically for discrete random variables. When we talk about later on, we will do the same thing for continuous also. There you will use the term PDF, probability distribution function. But sometimes PDF is used both places. PMF is specifically used for discrete random variables. Okay. So far, so good? Yes. Acha, tell me. Okay. Okay. Can any of these value be less than 0? No, ma'am. Why? Oh, ma'am, because the random variable cannot be negative. No random variable can be negative. So here, instead of, just consider this example. I was saying that give 0 if at least 1 head comes. Instead, I would have said give -1 if 1 head comes and 1 if no head comes. It's taking negative value, right? Nothing is stopping me from my random variable taking a negative value. Random variable can take negative value. What cannot take negative values? Probability. Probability तो negative नहीं हो सकती, right?
Yes, ma'am. तो आपके हो सकता है कि जैसे अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दैट योर एक्स वैल्यू इज 3, तो आप क्या बोलोगे? 0. 0. 3. We are never going to get 3 heads when we toss only 2 coins, right? So there is no element in my sample space which satisfies this. So this probability is 0, right? There is no probability attached to it. So either this, or it will only take some, if it has some member associated with it, it will take some positive number, right? If it doesn't have any member associated with it, it will take 0 value, right? The probability. Yes or no? Yes. Yes. So in that case, what can we say? That always we will have to see condition which is required for a valid PMF. What is the first condition? That the probability of X should be greater than equal to 0 for all possible values of X. Is that fine? Does this make sense? That this should be positive? I mean, greater than or equal to 0? Yes, ma'am. Okay. Acha, tell me. When I say that, I am adding the probability of all possible values. If you are adding the probability of 0 also, you're adding the probability of 1 also, you're adding the probability of 1 by 2 also, 2 also. What are you going to get? 1. 1. Why? Ma'am, because the sum of all probabilities 1. Right. That is one thing. दूसरा argument क्या हो सकता है कि 0 किसी ना किसी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आया होगा, राइट? अगर आपका रैंडम वेरिएबल इज ओनली टेकिंग 0, 1 और 2 वैल्यू, सो if you add all these probabilities, all possible elements that are there in your sample space would have been covered, right? Because what is this covering? 0 is covering TT, 1 is covering HT and TH. What is 2 covering? Or H. H. And you want to add all these probabilities. So basically, you're trying to find out the probability of your sample space, right? Yes, ma'am. So what is the probability of your sample space? 1. 1. So if you want to test if a particular PMF, probability mass function, is it valid or not? So if you sum the probabilities for all possible values of X, it should give you what? 1. 1, right? So this is the next condition that we have for a valid PMF, that if you sum for all possible values of X, if you sum this Px, you should get 1, right? Okay. Is that fine? Yes. These are the 2 conditions that you have to keep in mind while checking if some PDF that somebody gives you, is that valid or not. So far, so good? Yes, ma'am. Perfect. Very nice. All right. चलो जी, तो एक काम करते हैं, let's do some problems, let's do some questions and see how to find the PMF of a discrete random variable. Okay, so let's say all right. So there is one question which is the following.
So the question is saying that you have to check whether the following function can serve as a probability mass function. So can it be something like this? Can it become px for the discrete random variables? So they gave you two functions and they gave you the possible values of x, and they asked whether this can serve as a valid PMF or not for discrete random variables. Question clear हो गया? इन्होंने they gave you one function and then they are asking, can this serve as a valid PMF for discrete random variables or not? Okay. So first of all, so basically, can this become the px function? This is the question. Okay. This is some general function that they have given you. And they're asking, can this become a px function, which is a valid PMF, right? Can this become py or px basically, right? This is the question. Question समझ आया? Yes. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट. तो अब इनका कहना क्या है कि क्या ये एक वैलिड पीएमएफ हो सकता है. तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, कोई भी पीएमएफ वैलिड होना चाहिए. तो मतलब ये जो px वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, राइट? सो कैन यू चेक इफ दिस fx which is equals to x square by 30, is it always going to take positive or greater than or equal to value always for these possible cases? Yes or no? Yes, ma'am. So Ma'am, probability will take this. probability will what? Ma'am, the probability of these functions will take positive value. Yes, exactly. So basically ये जो fx है ये मेरा px ही तो बनने वाला है ना. अगर ये करेक्ट होगा तो ये मेरा px ही बनेगा, राइट? सो ये जो px फंक्शन होता है इसको आप fx के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. This tells you probability of a particular x value only. Okay. तो ये जो fx है ये probability नंबर ही है मेरे पास. Okay. तो when x value is 1, what is my fx value? 1 by 30. 1 by 30. If it is 2, then 4 by 2 by 15. yeah. When it is 3, then 9 by 30. 9 by 30. When it is 4, then 16 upon 30. 16 upon 30, right? So all the values are greater than 0, yes or no? First thing we have checked, all the possible values are greater than or equal to 0, right? Yes or no? First condition is satisfied? Yes, ma'am. Fx is greater than equal to 0 for all possible values of x. Yes, tell me, somebody had any doubt? Ma'am, the values we put in the function, the set of range, ma'am, is not equal to the p of x function. मैम f of x की जो भी रेंज की वैल्यूज होगी वो और सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं होगी. ये px और fx इक्वल कैसे, उसमें डाउट था. नहीं, इनका कहना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये एक px की तरह सर्व कर सकता है, ये क्वेश्चन है इनका. Can this fx, see, check whether this can serve as a PMF. So can this fx become a px? तो आपको चेक करना है कि जो भी px की प्रॉपर्टीज हैं क्या वो fx सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? नो? ओके, तो देखो ये देखो px क्या है, व्हाट इज px? इट्स अ फंक्शन, राइट?
px क्या, एक फंक्शन ही तो है ना, x अलग अलग वैल्यूज ले रहा है और एक प्रोबेबिलिटी नंबर दे रहा है, राइट? है कि नहीं? Yes. तो ये एक फंक्शन ही है, राइट? px Yes. is a function or not? At least like tell me this much. px is a function or not? Yes, ma'am. Px is also function. px is a function, और इन्होंने मेरे को एक फंक्शन दिया है और बोल रहे हैं कि क्या ये px बन सकता है, क्या ये एक वैलिड पीएमएफ होगा? तो कोई भी वैलिड पीएमएफ जो होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि भाई ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और इनका सम 1 होना चाहिए। तो मेरे को क्या चेक करना है कि क्या ये सारी वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और क्या ये सारी वैल्यूज जो भी एक्स दिया हुआ है उनको जब मैं सम करूँ तो क्या ये 1 आता है? बस मेरे को ये चेक करना है। ओके मैम। मैम मुझे ऐसे लग रहा था कि एफ एक्स की जो जो भी वैल्यूज डालेंगे उसे एक सैंपल स्पेस बनेगा, फिर उसकी पी ऑफ एक्स निकालना है, ऐसा कुछ। नहीं, देखो, जब भी आप कोई फंक्शन में वैल्यू डालोगे तब तो आपको एक नंबर मिलेगा, राइट? यस मैम। और नंबर ये प्रोबेबिलिटी नंबर है। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है वो तो इन्होंने खुद दिया हुआ है ना कि एक्स क्या क्या हो सकता है। यस मैम। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई सैंपल स्पेस रहा होगा जिससे ये 4 नंबर निकल के आए हैं, और इनसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकल रही हैं, राइट? ये चेन है यस मैम। कि सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस होता है, फिर उससे आपकी एक्स वैल्यू निकलती है, फिर उससे आपकी पी एक्स वैल्यू निकलती है, राइट? यस मैम। कहीं सैंपल स्पेस होगा जिसके अलग अलग एलिमेंट्स के लिए 4 नंबर्स आए होंगे, और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 3 की क्या हो सकती है, 4 की क्या हो सकती है, वो ये फंक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब ओके। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन एक सही पीएमएफ बन सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके मैम, समझ। ओके फाइन, चलो, ऑलराइट। हाँ जी, तो ये जो प्रोबेबिलिटी नंबर है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो पहली कंडीशन तो वैलिड है, राइट? यस। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास कि हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जब मैंने वैल्यूज पुट करी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो मतलब इफ आई डू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4, मेरी 4 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो इससे ज्यादा तो मैं सम कर नहीं सकती। ये कितना आएगा, 1 One. प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 30। क्या ये क्या आ रहा है, 30/30 Yes, ma'am. इज इक्वल टू 1, राइट? तो माई सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो विल दिस सर्व एज अ वैलिड पीएमएफ? यस मैम। बिकॉज ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो दैट इज हाउ यू चेक। सो फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर दिया कि ठीक है, ओके, यस दिस इज वैलिड, राइट? क्लियर है? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द यस। नेक्स्ट। चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ, लेट्स डू इट। सो दिस इज, अब किसी ने आपको ये दे दिया कि योर एफ एक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय k टाइम्स k प्लस 1, और x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ये भी इन्होंने बता दिया। क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 ब्ला 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 अप टू k, ये वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? तो अब आपको चेक करना है कि कैन दिस एफ एक्स सर्व एज अ वैलिड पीएमएफ। क्या ये एक वैलिड पीएमएफ हो सकता है? क्वेश्चन समझ आया? यस। ठीक है, तो फिर क्या चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं, बताओ। व्हाट शुड वी चेक? पहली बात तो क्या ये सारे पॉजिटिव हैं हर पॉसिबल वैल्यू के लिए, राइट? ओ मैम,
के का पता नहीं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये के ऊपर जाते जा रहा ओके मैम। है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्ला 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 के, तो पॉजिटिव ही होगा, राइट। यस। तो ये नीचे तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, और एक्स भी क्या है, एक्स भी पॉजिटिव ही है ना। But the sum won't be 1. Okay, so that we have to check. Okay, very nice. So first property is satisfied, that fx is greater than or equal to 0 for all possible values of x, right? So first condition is satisfied, right? What is the second condition? That I have to sum all these possible values, right? So I have to do summation fx, and x can go from where to where? Oh ma'am, 1 to k. So x is going from 1 to k, right? तो ये क्या होगा? What will be f1? 2 over k times k plus 1, right? Yes, ma'am. जब 2 रखोगे तो क्या होगा? 4 by 2 times k. k times k plus 1, right? आगे जाके क्या होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा, right? और जब आपकी x की वैल्यू k हो जाएगी तब क्या होगा? ये 2 times k divided by k times k plus 1, yes or no? Right? This is what the sum is going to be, right? Yes. Acha. What is common everywhere? This thing, this thing, this thing, this thing. This is common everywhere. Yes, ma'am. Can I take, इसको मैं बाहर लेके आ जाऊं? Can I take it common? Can I do 2 times k plus 1? मेरे पास अंदर क्या बचेगा here first? What will be in the first place? 1, 1. Second place में 2, 2. Third place में 3 till k. till k. ये क्या चीज है? What is this? AP. Of natural number. Sum of first n, sum of first k natural numbers, right? Yes. तो आपको कभी ये करना होता है ना, you know, if you're given 1 plus 2 plus 3 plus up to n, what is this? Sum of first n natural numbers. वो क्या होता है? n into n plus 1 divided by 2, right? ये होता है Yes, ma'am. है ना? तो ये क्या होगा फिर? सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स, तो n के जगह पे k आ जाएगा, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया? k टाइम्स k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? Yes. और मेरे पास बाहर क्या है? व्हाट इज आउटसाइड? मैम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होकर लास्ट में 1 हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। यस। तो क्या ये वैलिड पीएमएफ हो सकता है? Yes, ma'am. सारे पॉजिटिव थे और सम भी 1 आ गया, है ना? सो यस, इट कैन सर्व as a valid PMF. ओके जी, क्लियर है? यस। Yeah, you will have to do some
things like that. So summing like that, summation related बहुत सारी चीजें you will have to do now in this particular chapter. But you will get used to it because this is the first time you're seeing all of this. So it's a little overwhelming, could be a little overwhelming at the beginning, but it'll be fine. Don't worry. All right, let me give you some more things to do. Acha, very nice question we have. Okay, let's do that. Let's read this question. Very interesting problem. It is using your concepts of probability, counting, techniques, permutation, combination, all of that. And you're not trying to bring that down as well. Okay, ji, fine. Chalo. Suppose there are 5 people. There are 5 people. And who are these people? People name is A, B, C, D, E. Very convenient naming. Okay. And they are standing in a line in a random order. Random order meaning people can be sitting in any way. It's not necessary that it's A, B, C, D, E. It could be B, E, C, A, D. Anything. Okay. Let X denotes the number of people who are standing between person A and B. Then you have to find the probability distribution of X. So X is nothing but a random variable, right? X denotes the number of people who are standing between person A and B. अच्छा, पहले तो ये बताओ कि आपका सैंपल, आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? That there are 5 people who are standing in a line, right? What is your sample space? So basically, what is your experiment? 5 people standing in a line. Yes. Right? And they are standing in a line in a random order. So what could be some examples of how people can stand? And people's name is A, B, C, D, and E. Okay. तो कैसे कैसे लोग खड़े हो सकते हैं लाइन में? मैम सी खड़ा हो सकता है, देन सी डी हो सकता है, डी सी हो सकता है. नहीं, 5 लोगों को खड़ा होना है. ऑल 5. मैम इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करेगा. हाँ, ऑर्डर मैटर करेगा. तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई? A, B, C, D, E, राइट? यस. एक कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओके A, C, B, D, E, राइट? ऐसे ही कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं? How many possible options that we can have? How many elements are there in my sample space? 5 factorial. 5. Why? Because पहली पोजीशन के लिए कौन आ सकता है? कितने ऑप्शंस है पहली पोजीशन के लिए? 5. फिर पहला इंसान खड़ा कर दिया यहाँ पे, फिर कितने लोग बच गए? 4. फिर कितने लोग बच गए? 3, 2, 1. 1. तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कितना होता है? What is 5 factorial? 120. 120. So I could have 120 possible options, right? Is it possible for me to write all of that? No, ma'am. It's not possible. Don't need to write it. Okay. But we've understood what kind of sample space I'm going to get. So I'll have different possibilities of A, B, C, D, E, and these numbers fluctuating. These letters fluctuating here and there, right? So far, so good? Yes, ma'am. अच्छा, अब आपका रैंडम वेरिएबल आपने इस सैंपल स्पेस से डिफाइन किया. आपका रैंडम वेरिएबल क्या है? X, which is basically number of people who are standing between person A and B. A and B, right?
So for this question, for this seating this line arrangement, how many people are between A and B? Is there anyone between A and B? कोई है क्या A और B के बीच में? Ma'am, 3 numbers could be there. Okay, who all are standing between A and B? कौन A और B के बीच में खड़ा है? Ma'am, C, D and E. नहीं, हो ये देखो A यहाँ है, B यहाँ है, इनके बीच में कोई है क्या? No, ma'am. तो इनके बीच में कितने लोग हैं? 0. There is nobody standing between them, right? Yes. How many people are standing in between A and B in this case? 0. 1. One person. C is between A and B, right? Yes. So this here the value is 1, right? Can you tell me what could be the other possible numbers? 0, 1 or 2 and 3. 2 and 3. Can we have 4? No, ma'am. No, because फिर तो एक 6th person को लेके आना पड़ेगा, right? Yes or no? So far, so good. Any doubts so far? No. Chalo. So, what could be my possible values of the random variable? X can take. X की क्या क्या possible values हो सकती हैं? 0, 1, 2, and 3, right? Yes or no? Yes. Can you explain that once again? Yeah, so basically, suppose there could be 120 possible options of how people can stand, right? So one of the possibility is this A, B, C, D, E. One of the possibility is A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, right? These are just 5 possibilities that I have taken. In this case, how many people are between A and B? Nobody? This is one person, this is second person, this is third person, this is fourth person, and this is fifth person. These two are standing consecutively. There is nobody between them. So what could be the number x 0? In this case, how many people? One person, C. So one person is between them. In this case, how many people between A and B? 2 people. And in this case, how many people between A and B? 3 people, right? Okay, ma'am. And you can have other possibilities also. You are only going to get a number between 0 and 3 only, right? No other option available. Yes. Yes. So now, since these are all the possible values of x, and in the question, what are they asking? Find the probability distribution of x. So if you have to find the probability distribution of x, what are they asking? That for all possible values of x, tell me what is the probability. That's all. If you are able to do that, you are done, right? So if x value is 0, tell me px, p0. If x value is 1, tell me what is the probability that it is 1. If x value is 2, tell me what is the probability that x is equals to 2. If x value is 3, tell me what is the probability that this is 3, right? These are the only 4 things that I have to tell. And the moment I am done with this, my entire question is done, right? Because I just have to find these 4 values. Yes or no? Yes. ठीक है, ये होने के बाद मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ओके, अच्छा, टेल मी, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट विद दिस. What is the probability that there are 3 people between A and B? So if we want 3 people to be between A and B, where should A and B lie?
Where should A and B lie? Ma'am, There are two possibilities. A should be lie on either extreme side of right hand side or left hand side, and based on that, on the other side, this B should be placed on the second place. Right. So basically either A is here and B is here, or B is here and A is here, right? And who are the three people who are left? C, D, E. And I have to fill these 3 seats. How many options do I have? For this position, I have 3 people, right? For this position, I have 2 people. For this position, I have 1 people. How many people like this? 6. Same thing below as well, right? Yes or no? How many total options do I have now? 12. 12 options. Out of how many options? 120. 120. So what is my probability that there are 3 people between A and B? 1 by 10, right? Yes or no? Fine. Yes, ma'am. ठीक है, clear हो गया ये? What about what about nobody between them? What about this? 2 by 120. 2 by 120. Okay, there are only 2 options. Ma'am, I had an network. I had a network issue. Could you please repeat that? P of 3. हाँ, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो सकते हैं. If we Yes. want 3 people, so 6 these cases and 6 these cases when we flip the position of A and B, right? Yes, ma'am. So total 12 cases. Yes. Out of how many? 120. So what is my probability? 1 by 10, right? Yes. Okay, so now we want to find out what is the probability that there is nobody between them. How many options if nobody is between them? Tell me. This you do. Tell me what is probability of 0. How many cases? Nobody should be between them. So they are like a couple and they don't want to move away from each other. So they're like a single unit, right? तो जैसे पहले एक इंसान था A, B, C, D, E. There were 5 people. Now you can treat them like a single unit, right? It's like one person. This is other person, this is other person, and this is other person, right? Yes or no? And anywhere they go, they will go in like together, right? So how many options? In how many ways you can put 4 people? Because they are 1 people now. 4 factorial. 4 factorial. 4 factorial is how much? 4 times 3 times 2 times 1. 20. 24. Acha. But they can also switch position, right? Instead of AB, it could be BA also, right? Yes or no? Yes, ma'am. So we double the options. Yes or no? Yes, ma'am. So 24 more. So how many options? 48, right? Because this will be 2 factorial times 4 factorial, right? Ma'am, why do we have multiplied it by 2 factorial? Because these people can also change positions, right? AB
कैन फ्लिप टू बी, राइट? तो अब मान लो ये ऐसे खड़े थे, ए बी सी डी ई, ये एक पोजीशन है, तो लेकिन ए बी साथ में है, लेकिन ये बी ए सी डी ई होता तो ये एक अलग क्यू बन गई, राइट? यस मैम। और ऐसा हर पॉसिबल केस के साथ हो सकता था, राइट? यस। तो डबल हो गए ना केसेस, यस। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? यस। अब ऐसे अगर इन लोगों को ऐसे बिठा देते कि ये 3 लोग एक साथ रहेंगे, तो ये लोग आपस में अपनी पोजीशंस फ्लिप कर सकते थे ना, तो क्या करते? एक इंसान ये, एक इंसान ये, एक इंसान ये, 3 फैक्टोरियल, और ये लोग अपनी पोजीशंस फ्लिप कर सकते हैं, तो इसको क्या करते? 3 फैक्टोरियल, राइट? यस मैम। इस तरीके से, दिस इज द लॉजिक दैट वी आर अप्लाइंग, ऑलराइट? यस। फाइन, यस। चलो जी, ओके। तो कितना प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा ये? हाउ मेनी केसेस? 48 डिवाइडेड बाय 120, which is how much? 4/10. 4/10, right? Fine. Okay. Now, probability of 1, that there is one person between them. Now what to do? How do we do this? इसको कैसे करेंगे? And probability of 2, इसको कैसे करेंगे? What should we do? Now this is your homework. Think about it. Find this probability and find this probability. It's an interesting thing. Think about it. You will get it. हो जाएगा. थोड़ा सा सोचना, 1 2 4 एग्जाम्पल्स करके देखना, लिख के देखना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एंड देन जो भी हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दिस इज योर विच क्वेश्चन, यू हैव दिस क्वेश्चन, यू विल हैव दीज नोट्स, सो यू कैन फिगर इट आउट, ठीक है? ट्राई टू फाइंड दीज सिमिलर लॉजिक्स, जो हमने लॉजिक्स यहाँ पे लगाए हैं और यहाँ पे लगाए हैं वैसे ही लॉजिक्स लगेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली। 6 factorial multiply by 4 आ रहा है। Ma'am, can it be 3 factorial into 3 factorial? सॉरी, Can it be 3 factorial into 3 factorial? okay, how? Explain. Ma'am, 3 things will go together like A, B, C. Okay. But if you are doing 3 factorial into 3 factorial, they will change position and they can become ABC, BAC, but then there is nobody between them, right? Yes, ma'am. We want one person to be between them always, right? Yes, ma'am. है ना? तो ये ऑप्शन है, ठीक है? ओके, थोड़ा सोचना इसके बारे में, you will be able to do it. Think about this. मैम 3 factorial multiply by 6. Okay. How? और मैम ए और बी की पोजीशन रख दिया, उसके बीच में एक का गैप दिया है और बी के बाद 2 गैप्स दिए हैं। B के बाद 2 गैप्स दिए हैं, यस मैम। ठीक है, फिर और
मैम फिर इसमें 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 और 2 एंड 1, वो ठीक है 3 फैक्टोरियल लिखा। उसके बाद में मैम ए और बी की पोजीशनिंग की, जैसे ए लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ए को सेकंड प्लेस पे लाएंगे और बी को फोर्थ प्लेस पे। ठीक है। तो अभी जैसे है 1 2 3 4 5, राइट? ये पोजीशंस हैं। तो पहले आप क्या कर रहे हो? यस मैम पहले ए को फर्स्ट पोजीशन पे लाया और बी को थर्ड पे। फर्स्ट और थर्ड, वेरी नाइस। और उसके बाद में मैम ए को शिफ्ट किया मैंने सेकंड पे और बी को फोर्थ पर। ठीक है, वेरी गुड। और देन मैम मैंने ए को शिफ्ट किया थर्ड पे एंड बी को फिफ्थ में। वेरी नाइस, वेरी और गुड। मैं उसी तरीके से जैसे ए और बी है वैसे बी और ए भी हो सकता है। तो ये तो 3 ऐसे 1 दो। भी हो सकता है, और ये 4 2 भी हो सकता है, और फिर ये यस 5 3 भी हो सकता है, राइट? पोजीशन यस ऑफ मैम। ए, पोजीशन ऑफ बी, राइट? यस तो और ये बाकी 6 हो गया और 3 फैक्टोरियल। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो क्या किया हमने, क्या क्या कर लिया कि ए और बी की क्या क्या पॉसिबल ऑफ प्लेसेस हो सकती हैं, राइट? तो या तो वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आएंगे, या तो फिर वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आएंगे, या फिर वो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आएंगे। और सेम उनकी पोजीशन फ्लिप भी हो सकती है, राइट? तो यस 6 पॉसिबल केसेस हो गए मेरे पास। और बाकी लोगों के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, राइट? यस ठीक है। तो फिर इससे क्या हो गया मेरे पास? 6 times 3 factorial, which is how much? What is 3 factorial? 3 factorial is 6. 6 times 6 is 36, right? 36 divided by 120. How much is this? 3 by 10, right? Yes or no? This is okay? यस Acha ji, very nice. Now using the similar logic, can you do this? Ab 1 2 3 4 5. If you have to keep 2 people between you, what could be the possible options? A could be sitting at the first place. If that is the case, then where will B be sitting, standing? Fourth place, right? Then only there'll be 2 people between them, right? मैम 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4। Yeah. So what are the positions? 1 4 and 2 5, right? And similarly 4 1 and 5 2. Position of A, position of B. And then rest of the people can flip with 3 factorial ways, right? So this is the number of ways. What is 3 factorial times 4? 24 divided यस by 120. How much is this? 2 by 10, right? So far so good. यस अच्छा, just check if you've done everything correctly or not. तो x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू जब 1 थी, x की वैल्यू जब 2 थी, x की वैल्यू जब 3 थी, तो what is p0, what is p1, what is p2, what is p3? क्या आंसर्स है मेरे? p2 की वैल्यू है 2 by 10, p1 की वैल्यू क्या है? 3 by 10, ठीक है। p0 की वैल्यू कितनी है? 4 by 10, राइट? और p3 की वैल्यू कितनी है? 1 by 10. What is a good way to check if you've done everything correctly or not? You can do what? अगर चेक करना है कि सब सही किया है कि नहीं, तो कैसे करोगे? You can add all the numbers. You should get a 1, right?
So are you getting a 1? Yes, ma'am. तो मतलब ये एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चेकिंग हो गया कि हमने जो है करेक्ट चीजें करी हैं. फाइन. Yes. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है? No. चलो, वेरी नाइस, परफेक्ट. Okay, guys. ठीक है, let's stop here for today. Anshika, do you want to discuss your doubts right now, or whatever you want to do? Ma'am, as your wish, if you are able to do right now, tomorrow. Can we connect sometime tomorrow or maybe on Saturday? Yes, ma'am. Sometime I'll post it on the group. Anybody else who's interested, it'll be a quick 10, 15, 20 minutes thing. So I'll post it on the group, and we can do it on Saturday or Sunday, whatever. You guys have college on Saturday, right? Ki nahi? No, ma'am. Saturday, Sunday छुट्टी होती है. सैटरडे संडे छुट्टी होती है. ठीक है, फिर सैटरडे को मैं एक ग्रुप में लिंक भेज दूंगी. अराउंड दी लंच टाइम पे वी कैन कनेक्ट. ठीक है? Yes. All right. Okay. Okay, guys. I hope you were able to understand it and you are finding it interesting. बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, ma'am. नहीं ना? ठीक है, अब ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, all right. Okay, guys. Take care. Thank you so much. Bye bye.